So here is the bike RC200. So test ride के लिए ready. Summit और let's run the bike. और sound exhaust not सुने. काफी मस्त है. KTM RC 200 that almost for the last 5 years we have the same model and now it has been updated. So before we reveal, I would like to brief you on what we are going to see today out here. The bike is in a totally new look. You can see a totally new avatar right now. So for the first, when we go ahead, these are the things, these three things which we are changing: the performance, the ergonomics, and the technology. For the performance, we have changed the airbox for larger airbox for more air intake and a curved radiator for better cooling of the bike. Previous generation RCs had a lot of might be heating issues or something. There's an answer to that. So this is an example of the older one and the newer one. You can see the difference. And this is the curved radiator. This is a new curved radiator which is also being introduced in the adventure models of KTM. The ergonomics, we have an aerodynamic design. Clip-on handlebars with risers. Larger fuel tank. The fuel tank previously was of 9.5 kilos. Now it's 13.7. A light trellis frame. Not only a lighter trellis frame but also a split trellis frame this time. A comfortable sitting posture and lighter wheels. The number of spokes on the wheels have been reduced from 8 to 5. The change in the look, this is the basic what we are going to see today. The clip-on handlebars which have risers. You can set it according to your riding preference. You can put it slide up for comfortable riding posture and you can below it down if you want some aggressive or sporty riding posture. The fuel tank of 13.7 liter and the split trellis frame. So now this has two frames, one at the front, one at the back. Okay, here comes the main thing. So you see there are around 8 spokes on this. We have changed it to around 5 for better lighter weight. Technology. The lights on this bike changed to LED. All of the lights on this bike are LED. All of the including the indicators, the front lights and everything. A new bigger LCD display. Supermoto ABS which allows the rider to slide the rear wheel into a corner for better cornering stability. You have Supermoto ABS in this. And these are the basic differences we have the bike. The front tank was trellis, now split trellis. There are two frames. The wheelbase was starting 41, now it's starting 47. A longer wheelbase with better balance and better stability. Ground clearance was 153, now it's 158. And also the fuel tank 9.5 to 13.7. The front brakes have been changed to 300 to 320 mm. So these are the basic changes. We'll be seeing it in two colors out here. The Ebony black and the silver metallic. So before I go ahead and reveal the bike, 22 KTM RC 200 is ready to line up at the starting grid with an all-new eye-catching race bike-inspired style and unmatched. I'd like to call forward Mr. Lawang Tamang and let's have a cheer. Yes, sir.
तो गाइस अभी तक आप लोगों ने सिनेमैटिक देख लिया होगा, तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो चाबी लगाते हैं और लेट्स क्रैंक द बाइक फर्स्ट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी बढ़िया है और लेट्स क्रैंक द बाइक। साउंड एग्जॉस्ट नोट सुनिए, काफ़ी मस्त है। यस यू कैन सी द लाइट्स, DRL भी मिल जाता है। रियल लाइट शायद 90 में आता है और इसमें भी यही है। अच्छी बात ये है कि इसका अभी जो क्लिप ऑन है वो फुली एडजस्टेबल है और अच्छी बात ना गाइस, अगर आप नया RC200 को गिरा भी लेंगे ना तो गेट लीवर का टूटने का बहुत कम चांस है, क्योंकि ऐसा हो जाता है। इट्स फोल्डेबल, तो डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है आप सबको। यहाँ पे ना दिख का यहाँ का हिस्सा है ना जो हटा दिया है, तो अच्छा दिख रहा है। और कैलिबर बाई ब्रेक है वो पुराना वाला ही है और इसका साइज़ भी बढ़ चुका है, पहले वाला छोटा था। टैंक का भी शेप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। और टायर C1 है, MRF C1। टेल सेक्शन देख सकते हैं गाइस, पूरा RC8 जैसा बना दिया है अभी RC200 को। कुछ देर बाद इसका क्या बोलते हैं टेस्टर का वीडियो भी लेके आऊँगा। काफ़ी अच्छा है गाइस, सीट भी काफ़ी अच्छा है, कुशन काफ़ी बढ़िया वाला। और क्या बोलूँ गाइस, RC200 का जो पिक्चर में जो था, जो फोटोज़ में है ना वो अच्छा नहीं है, पर ऑन नेकेड आइज गाइस इट्स प्योर ब्लेस, काफ़ी बढ़िया वाला दिख रहा है। और RC200 का ही वीडियो चल रहा है यहाँ पे और सब लोग RC का जो लॉन्च इवेंट है इसी के लिए आए हैं। और देख सकते हैं एकदम A1, काफ़ी बढ़िया गाइस। इसमें कहीं सुपर मोटे भी सब कुछ, सुपर मोटे ABS और सब कुछ है, तो देखिएगा श्योर। और इसका ब्रेक लीवर भी फोल्डेबल है, बढ़िया गाइस। इट्स ब्यूटी गाइस, ब्यूटी। कॉकपिट का व्यू में गाइस काफ़ी अच्छा है। और ये लुकिंग ग्लास जो मिरर है मुझे अच्छा नहीं लगा ये वाला, मुझे पहले वाला जो दूसरा था ना वो वाला मिरर अच्छा लगता था, ये वाला अच्छा नहीं लगा। पर जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो काफ़ी बढ़िया है। और लुकिंग एट द बाइक, टैंक का भी शेप अच्छा है पहले वाला से तो ठीक है। कुछ देर बाद टेस्ट राइड के वीडियो मिलेंगे। तो हेयर इज़ द बाइक RC200, तो टेस्ट राइड के लिए रेडी। लेट्स सी कैसा होगा फर्स्ट राइड। कूल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले गाइस, ABS रोड पे है, मक्खन गाइस। So let's see. Okay, pick up. काफ़ी ज़्यादा है गाइस पिकअप इसका। रिफाइनमेंट की ना गाइस बात ही अलग है, एक नंबर रिफाइनमेंट। काफ़ी ज़बरदस्त है इसका। तो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी मज़ेदार, मज़ा आ गया। और सीटिंग पोस्चर ना गाइस उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं लग रहा है मेरे को, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है, मज़ा एक नंबर मज़ा गाइस। और इससे ना काफ़ी देखने का मन कर रहा है पर ट्रैफिक की वजह से। और
पिकअप भी अच्छा है 3 नंबर में। इजी है, इजी, कोई भी गियर में इजी ओवरटेक का, इजी ओवरटेक। और टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसका ना एयर फिल्टर जो है 40% बड़ा कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जाओ ब्रेकिंग और काफ़ी मैन्युवरेबिलिटी भी काफ़ी बड़ा है इसका। और इसका ना इंडिकेटर यहाँ पे है सेम छ होइन। जो पहिला हुन्छ नि, सुन न, पहिला त्यो अब तारमै उठाउँदाखेरि त्यो खोक्थ्यो नि, खक गर्ने, त्यो छैन, स्मुथ छ। एयर बक्स ठुलो छ न, एयर बक्स 40% बढेको छ नि त है। त्यसको लागि नम्बर नि कस्तो आयो त, लिङ्क कपी गर्नु, क्रोममा पेस्ट गरेर। ओके ओके। लवङ तामाङ गर्नु। भाइ थ्याङ्क यू दा, बाई। हजुर जो हामी